Hero is waiting in the garden. Hero is waiting for heroine in the garden. Present continuous tense. Movie starts. Heroine comes late. Yes, yes. Hero says, "Hey, why are you late? Be present." Heroine says, uh, "Mind your own business. It is none of your business." Interactive sentence idiom. Hero says, uh, "I will not meet you. I will not talk to you." Future simple. Meanwhile, villain enters. He whistles to see the heroine. And hero says, "What do you think you are? Your days are numbered. You don't know me." Then hero beats the villain. Then villain runs away. This is a common scene of any. But if you have to make a very nice story, you will have to think, you will have to create a plot. You can take any movie which is in your mind and you can make it compact because me story is so big, but you can make it compact. So like this, you can create a story. It will be very interesting if you can make it. And after your inspiration, if Manya wants to make, she can also make later. Juhiji wants to make, she can also make later. So it will be good example. I will try to send you any video if I find of my senior students. Okay, now let's stop it here. I gave you this verb additionally because of the sentence. So please, can you tell me, according to your sequence, what was the last or second last verb? Juhiji can tell me or Manya can tell me because Poonam must not be writing the verbs of this session. Are you writing, Poonam? So sometime I'm writing, but from last week I'm not coming in this class. So No problem. Juhiji is writing, Manya is writing. So last verb. Hmm? Second So the last. last verb was get angry. No, it was because of the sentence I gave you, but just before it, second last, third last, Okay, fourth last. the second last verb was succeed, सफल होना. Yes, yes, correct. Uh, have I given you this verb, sudharna, उपकरण आदि? Yes, Yes, sir. sir. Rectify or Yeah, repair sir. are Actually, last 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 is words. rectify. Yes, 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 yes. Gigi ask this question. Manya, what should be the word for jagna, uthna? The verb for jagna utna should be wake up. The Poonam, the what should be the second form of wake up? the second form of wake up should be woke up.
What should be the third form of wake up, Joy Didi? The third form of wake up should be woken up. Juji, is it? Yes. Ask this question. Manya, what should be the another word for jagna? The another verb for jagna should be get up. Puramdi, what should be the second form of get up? Second form of get up should be got up. What should be the third form of get up, Joy Didi? Got. The third form of get up should be got up. Now, please tell me what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was there. There, correct. अच्छा जूही जी, कभी किसी पिक्चर आदि में आपने एक सेंटेंस सुना है, गुस्से में बोला जाता है डैमेज, ऐसा कुछ सुना है? तो क्या आप स्पेलिंग बता सकते हैं उसकी? Guessing. Sir, DAMN, damn. No, sir, I अच्छा, कभी लिखा हुआ नहीं देखा, सुना जरूर है। सुना है ये सर। चलिए मान्या से पूछते हैं। Sir, I think DAMBGE. और अब पूनम से पूछते हैं। Sir, DEMBD होगा, DM damned. अच्छा हो रहा है ये, अपन पूरा रिवाइज कर रहे हैं। इनके बैच में क्या हुआ था पूनम, मैडम ने सब रेडीमेड भेज दिया था टाइप करके, तो जो अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए वो हो नहीं पाई। अब हम इसमें जानबूझ के जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि गूगल स्पेलिंग दे देता है फट से। हम अपने बैच में जब पूछते हैं तब मजा आती है इसमें। This is the spelling. Damn it, you spoiled everything. Damn it, you spoiled everything. Can you guess the meaning? तुमने सब खत्म कर दिया सर, या खराब कर दिया? सर धत तेरी की। There is one more Hindi you must have got by this one. Got it. Let's make some sentences. N is silent here, and if we write here DAM, okay, I'm asking Poonam, what is then? Damn is noun, sir. Yes. Ask next related question to somebody. What should be the meaning of damn? Hindi meanings. Juhi Didi, what should be the Hindi meaning of damn? The Hindi meaning of damn should be Satyanash. Anya? Sir, the Hindi meaning of dam should be jheel.
Do you know Poonam? Yes, sir. बांध बोलते हैं, बांध. Band. Yeah. Yes, sir. Yes. याद आ गया. In we have one dam in Jabalpur. Its name is Bargi Dam, and you also have one dam in Nagpur. What is its name? Okay, later you can tell me. So this I is know this. about Raipur, sir. In Raipur, near Raipur, it's a Gangrel Dam. Yes. Hmm. So where the government stops water and uses it for irrigation, it is dam. Spelling is DAM, but it is interjection. इंटरजेक्शन वर्ड मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द जिससे कुछ एक्सप्रेशन होता है इंटरजेक्शन. So let's make one sentence. It is very useful for your day-to-day life. Damn it, you are taking so much time to make one sentence. धत तेरे की. आप एक सेंटेंस बनाने के लिए इतना समय ले रहे हैं. Damn it, I missed it. धत तेरी की, मैंने ये मिस कर दिया. Damn it, you have watched this movie alone. धत्तेरी की, तुमने ये मूवी अकेले देख ली. Damn it, I lost my key. धत तेरी की, मैंने अपनी चाबियां खो दी. Damn it, my spelling is wrong. धत तेरे की, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई. Damn it, I So दूध को forgot my बहने को क्या first. बोलते हैं? Damn it, milk spoiled. दूध बह गया सर, जैसे गैस दूध. बह जाता है सर, जैसे गैस पर हम्म. ओवरफ्लो. Damn it, milk get overflowed. क्या? Got Boil milk got. extra मतलब कुछ. ये सेंटेंस ऐसे बनता है. Damn it, बेटा, you have spilled all the milk. Damn it, you spilled all the milk. Sir, I want to make one more sentence. Damn it, chapatis got overcooked. Damn it, one of more variant has come of corona. One Say more variant of corona. one more variant of corona has come. तेरी की कोरोना का एक और वेरिएंट आ गया. Damn it, schools again closed. देखो पूनम, ये सेंटेंस जो बनाया ना मान्या ने, ये पैसिव वॉइस में बनेगा. Damn it, the schools are closed again. Passive voice, the use of passive voice. Damn it, Lakshmi,
You cannot do single work properly. सत्यानाश हो लक्ष्मी, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती. Damn it, my maid is not coming today. इसको एक और अच्छे तरीके से बनाते हैं, फिर आप सब लोग एक एक करके बोलना, बड़ा यूजफुल है ना. Damn it, my maid has bunged again today. Damn it, सत्यानाश. my maid has banged again today. You know bunk verb? No. Yes. Juhi, नहीं, मान्य asked this question. Punamdi, what should be the verb for goal marna? The verb for goal marna should be bunk. Bunkin. Okay. What should be the second form of bunk? The second form of bunk should be bunked. Manya, what should be the third form of bunk? The third form of bunk should be bunked. Poonam, did you ever bunk the school? No, no, sir. I did not bunk the school anytime. अब ये गलत तरीका हो गया पूनम. Poonam, ask me the same question. I will answer. Manya, listen carefully. I will ask Manya. Manya will ask Juhi. Sir, I want to answer this question actually. Okay. Firstly, you ask. No, sir, I never bunked my school. हाँ, ये सही तरीका है. मान्या, क्या कभी स्कूल से गोल मारा था? नहीं सर, मैंने कभी स्कूल से गोल नहीं मारा था. Ask. Juhi. Punam ji, okay. Juhi. Juidi, are you ever bunked your school? Sorry. Have you ever? No. Past simple. Did you ever bunk your school? No, I never bunked my school. दी, क्या आपने स्कूल में कभी गोल मारा था? नहीं, मैंने स्कूल में कभी गोल नहीं मारा था. मान्य, अपन भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, तो ये हैव में तो नहीं आएगा, वो प्रेजेंट होता है. बिल्कुल सही है जुही जी, योर आंसर इज करेक्ट. तो अपन भूतकाल की बात कर रहे हैं, स्कूल को तो कितना समय हो गया, तो दिस इज पास्ट सिंपल. जुही जी, योर आंसर वाज एब्सोल्युटली राइट. नाउ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू पूनम. Poonam, did you ever bunk your classes? Most of the time, I bunk my classes. सेकंड फॉर्म. Sometimes. क्या आपने These days. ओके, क्या आपने क्लास से बंक मारती है? नहीं, करती हैं, हाँ, बंक करती है ना. इज रॉन्ग. क्या आप अपनी क्लासेस बंक करती थी? नहीं करती. साथा थैया के लिए हम बोलते हैं कि आप भरतनाट्यम की क्लास में ज्वाइन कीजिए. क्या आपने अपनी क्लासेस बंक की थी? नहीं नहीं सर. एक बहुत खूबसूरत चीज सिखा रहे थे हम, उसमें आगे लिखवाएंगे. You did not notice. Okay, I'm asking to Poonam. Poonam will ask you again. No, I'm asking to you, Juhi. Did you ever bunk the school?
No, sir, I did not ever. Last time your answer was right. I never bunked my school. क्या आपने कभी स्कूल में गोल मारा था? नहीं, मैंने कभी स्कूल में गोल नहीं मारा था. Okay, Poonam, did you ever bunk your classes? Yes, Juhi Didi, last week I bunked my classes. क्या आपने पहले कभी क्लासेस में बंक मारा था? हाँ, मैंने पिछले सप्ताह क्लासेस में बंक मारा था. Manya, what should be the noun of bunk? Okay, Manya asked what is. What is bunk? Poonam di? Bunk is noun. Poonam di, it's your go. Okay. What should be the second Hindi meaning, sir? Manya, you ask. What is the Hindi meaning of bunk? Juidi? The Hindi meaning of bunk should be goal. नहीं, गोल होगा सर सिर्फ. ओके. अब इसमें ना तो आएगा नहीं, क्रिया नहीं है. ऊपर जो लिखा है वो वर्ब है, वो क्रिया, इसलिए उसमें ना आ रहा है. Have you written both meanings? Yes, sir, I have written both of the meanings. Juhi ji is writing. Yes, sir, I have. There. Should I erase? Yes, sir, you should erase that. This is today's idiom. Firstly, Manya will ask first related question to Juhi. Juidi, which chapter is this sentence related? This sentence is related to present simple. Ask Poonam. Be chapter, sir. Be present. This sentence is related to be present. Manya, related अपन ने अब छोड़ दिया है ना, कुछ नया पूछने लगे हैं. Yes, sir. This sentence belongs to be present. मान्य को पूछने दीजिए. Which chapter does this sentence belong? This sentence belong. This sentence belongs. Be present. Preposition is missing. To. Yes, sir. This sentence belongs to be present. Is आ गया, is नहीं आ सकता. This sentence belongs to be present. Juhi ji, ask the next question to Poonam. Poonam, what is the subject in this sentence? Truth is the subject in this sentence. Is there any helping verb in this sentence, Manya? No, there is no helping verb in this sentence. Juidi, what is in this sentence?
is the helping verb in this main verb in this sentence. Sorry. Poonam, what is bitter in this sentence? Bitter is the adjective in this sentence. Ladies, all the tastes are adjectives. जितने भी स्वाद नाम के शब्द, स्वाद के लिए जितने भी शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं, वो विशेषता बतलाते हैं कि ये कैसा है. अगला सवाल कौन करेगा? Ji, it's your go. No, Poonam, it's your go. Sir, should I? Poonam, what is the Hindi meaning of truth is bitter? The Hindi meaning of truth is bitter is सच कड़वा होता है. जूही जी, इसको इन्वर्टेड बना के मान्या से पूछिए. Manya, is truth bitter? Yes, the truth is bitter. क्या सच कड़वा होता है? हाँ, सच कड़वा होता है. Poonam, is truth bitter? Sometimes truth is bitter. क्या सच कड़वा होता है? कभी कभी सच कड़वा होता है. Sir, is truth bitter? Yes, of course, truth is better because people do not like it. Okay, now I'm giving you a field work. Right now, if you can answer, it will be very nice. Otherwise, you can answer tomorrow, day after tomorrow, 2 days after tomorrow. I have given here the meaning of bitter. Now, can anybody tell me the meaning of this word? Sir, salty. The salty. Yes. And this word? So, Spelling? SOUR. And the last one? Spicy. गलत जवाब. Maximum people think spicy means तीखा. हॉटी होगा, हॉटी, तीखा. सही जवाब. Hot.
We take soups in restaurants hot and sour, tikha and khatta. Absolutely correct. Sometimes the kids in my class don't believe that they say, sir, hot means garam. So I have one reference here. I will show you with split camera. Uh, Poonam, can you read it? Yes, sir. Medium hot. Juhi ji, Yes, sir. Medium hot. Manya. Medium hot. अब आप अच्छे से जानते हैं ये प्रिया पनीर बटर मसाला है जो कि पैकेट में मिलता है। तो किराने की दुकान से जब हम इसको खरीदेंगे तो ये गरम तो नहीं होगा। अच्छा, मीडियम हॉट में देखिए 2 मिर्चियों में रेड कलर भरा हुआ है और जिसको ज़्यादा तीखा चाहिए है वो मान लो अगर पढ़ नहीं सकता है तो भी उसमें 3 मिर्चियों में रेड कलर होगा तो वो ले सकता है और जिसको और कम चाहिए है वो 1 मिर्ची में रेड है तो वो वाला ले सकता है। तो एक्चुअली हम अब धीरे धीरे इस बैच में वो समय आ रहा है कि ऐसी चीजें आपके आसपास सबके किचन में बहुत सारी चीजें मौजूद है आसपास माहौल में। तो इंग्लिश सीखना एक्चुअली किसी क्लास या बाय बुक्स टेक्स्ट बुक it is a wrong perception in our mind. We can learn, okay, you can learn physics, chemistry, botany, zoology, commerce, and other subjects because they are subjects by books and all. But English is a language. We all are surrounded by English somewhere. Like this. In your kitchen, there is so much English. But you take it out and use in your sentences, day-to-day sentences, while creativity. So the words will come on your tongue and they will be strong and your vocabulary will be strong. So sometimes people cry that my vocabulary is weak, that's why I cannot speak fluent English. So there is a very good, remedy. Remedy means upchar. This is easy remedy. Just be aware of your atmosphere. The things are in your kitchen. So you can learn and you can use them in the sentences. The most important thing. Use them. Like Juhiji, if I ask you what is the word for elaichi, do you know? Cardamom, sir. Okay. And what is the word for good? Anybody knows? Jaggery. Agree. Yes. So actually, I have saved so many examples in my uh, like there is a packet of gajak you can see. So here if you read, it is very small red letter, that's why I'm not showing you. But ingredients, ingredients इसमें उपयोग होने वाली चीजें. So it is written here. Spelling of jaggery is available here. If you can see, please, what is this? Is it visible? So, Yes, sir. sesame seeds means til, jaggery and cardamom. Ingredients: jaggery, sesame seeds, and cardamom. Ingredients: jaggery, sesame seeds. Sesame seeds means Safed til. Till.
Till, correct. And cardamom, elaichi. So it is the easiest way to develop your vocabulary. At least for day-to-day life, you can use it. And you can talk to your children, to your family members. अरे एक कार्डमम देना. Do not speak complete sentence in English. एक कार्डमम देना बेटा. ऐसे like this. Now you will never forget sesame seeds now for till. And sometimes you can make sentences. I am making laddu of sesame seeds because Sankranti is coming. That's all. By your mouth, you can use it. Okay. So, have you written this? Huh? No problem. It is recorded. So you can write it sooner or later. Now, meanwhile, tell me what was the last. Acha, tell me, Juhi ji, which chapter is going on in your batch? Present simple is going on in our batch, sir. करेक्ट. आप पूछिए मान्या से पिछला सेंटेंस कौन सा था. Manya, what is the नहीं which कौन सा था. कौन सा था. What was the last sentence, Manya? Of present simple. What was the last sentence of present simple, Manya? The last sentence of present simple was क्या आपके पापा को गुस्सा आता है? Help your father go bananas. Correct. Please write down the next sentence in present simple. यह पंखा आवाज नहीं करता है. यह पंखा आवाज नहीं करता है. मान्या एक बार हिंदी बोल देना प्लीज. यह पंखा आवाज नहीं करता है. Correct. Who has to make this sentence? Should I? Do you want to make? Juhi, you don't want to make? Okay. Please go ahead. I have to make this sentence. This sentence belongs to simple present tense. This is a negative. It is a negative sentence. It is a negative sentence. It is a negative sentence. Firstly, I will take the introductory subject. Introductory. No. Firstly, I will take the subject, and the subject is this fan. Later on, I will take the borrowing helping verb does. ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ. आई एम आस्किंग जस्ट फॉर नथिंग, फॉर रिवीजन. पूनम आप डस क्यों धार ले रहे हैं? Because in simple present tense there is no helping verb, so I am borrowing the helping verb.
with singular number, that is does. और दूसरी कौन सी सहायक क्रिया हम उधार लेते हैं? In plural numbers, we take do. वी टेक डू। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो हम डू उधार लेते हैं, लेकिन यहाँ करता है दिस फैन, तो ये एक है, दिस फैन एक ही है, तो वी आर बोरोइंग डस। थैंक यू, गुड। Later on, I will take the negative word not. After that, I will take the main verb, first form of the verb, that is make. Lastly, I will take the object or adjective noise for sound. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। एक चीज पहले ये सुन लीजिए। जी जी, आपको याद होगा नेगेटिव बनाने का नियम कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद कोई शब्द नहीं रहता है, इसलिए हमें उधार लेना पड़ता है, या तो डू या डस। पिछले सेंटेंस में हमने प्रश्न बनाने के लिए उधार लिया था, इस बार हम नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए उधार ले रहे हैं। तो दो स्थितियों में अभी हम देख चुके हैं उधार की जरूरत पड़ रही है हमें, तो इस चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये जो गलती हो रही पूनम से, उसका कारण ये है। अच्छा हुआ पूनम, यू हैव जॉइंड दिस पेज। अब मैं अगला प्रश्न, अब मान्या करेगी अगला प्रश्न। पूनम जी, what should be the verb for आवाज करना और शोर करना? जूही जूही जी। जूही दी, what should be the verb for आवाज करना? The verb for आवाज करना should be make a noise. What should be the second form of make a noise, Poonam? Second form of make a noise should be made a noise. What should be the third form of make a noise, Manya? The third form of make a noise should be made a noise. Now your description will be correct, Poonam. A noise, yes. Lastly, I will take the first form of the verb, and that is make a noise. At the end of the sentence, I will put the full stop. पूनम, इसको इन्वर्टेड बना के मान्या से पूछिए। Yes, sir. Manya, does this fan make a noise? No, this fan does not make a noise. मन्या, क्या यह पंखा आवाज करता है? नहीं दी, ये पंखा आवाज नहीं करता। पूनम ने रहा है पूछा क्या मान्या? No, sir. Juidi, does this fan make a noise? Sorry, man. जब तक जूही जी अपनी खांसी पर कंट्रोल कर रही हैं, तब तक हम कुछ सेंटेंस बनाए नेगेटिव। क्वेश्चनिंग आंसरिंग के रूप में शुरू करते हैं। आई एम आस्किंग टू पूनम, डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट इन योर एरिया? No, sir. Electricity does not fluctuate in our area.
क्या आपके एरिया में लाइट फ्लक्चुएट होती है? नहीं सर, हमारे एरिया में बिजली फ्लक्चुएट नहीं होती है। हमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट व्यक्ति नहीं रखना है इसका। ओके सर। मान्या सर, अनदर क्वेश्चन ना। Manya, does your tube light blink? Does your room's tube light blinks? Blink. Does your room's tube light blink? No, Didi, it does not blink. मान्य, come again. No, Didi, my room's tube light does not blink. Does not blink. मान्य, use pronoun. It does not blink. Yes. मान्या, क्या तुम्हारे रूम की ट्यूबलाइट ब्लिंक करती है? नहीं दीदी, ये ब्लिंक नहीं करती है। Now I am asking one question, same question to Juhi ji. Juhi ji, does this fan make a noise? No, sir. It. Sorry, sir. Come again, please. बस it अच्छा, सही है. same. Okay. It does not make a noise. Come again. I could not listen. Voice chopped. It does not make a noise. Make a noise. It does not make a noise. Yes, sir. क्या ये पंखा आवाज करता है? नहीं, वह आवाज नहीं करता है। अब हम नए सेंटेंस बना रहे हैं. मान्या, it is Manya's go. She will ask me, I will ask Poonam, Poonam will ask you. Sir, does your gas burner burn slowly? No, it does not burn slowly. It burns very highly. सर, क्या आपका गैस बर्नर स्लो चलता है? नहीं, धीमे नहीं जलता है, बहुत ही तेज जलता है. It is actually black cylinder gas. Professional. Poonam, does this area of whiteboard shine always? Sir, not always, but sometime it shines. क्या whiteboard का ये वाला एरिया हमेशा चमकता है? सर, हमेशा नहीं, पर कभी कभी चमकता है. ये कभी कभी चमकता है. अब जूही जी से एक सरल क्वेश्चन करना. Okay, sir, it's my go. I had to ask. Juhi Didi, does your fridge vibrate all the time? No, my fridge. No, it does not vibrate all the time. क्या आपका फ्रिज पूरे समय वाइब्रेट होता रहता है, करता रहता है? नहीं, वह पूरे समय वाइब्रेट नहीं करता है. Poonam, as you are watching, Manya is facing problem and Juhi ji is facing problem to make sentences
immediately. It comes by practice, and they got less practice. That's why they take that. Who is ready? Sir, I am ready. Does this local train run fast? Uh, no, this local train does not run fast, but Mumbai's local trains run fast. क्या ये लोकल ट्रेन तेज दौड़ती है? नहीं, ये वाली लोकल ट्रेन तेज नहीं दौड़ती, लेकिन बम्बई की लोकल ट्रेन्स बहुत तेज दौड़ती हैं. आई एम आस्किंग इजी क्वेश्चन टू जूही जी. जूही जी, डज egg boil within 30 seconds? No, it does not boil within 30 seconds. क्या अंडा 30 सेकंड में उबल जाता है? नहीं, वह 30 सेकंड में नहीं उबलता है. I am giving you very easy sentences of your Yes, sir. kitchen. Very nice. Poonam's sentence was also nice. Does your doorbell rings whole day? Sir, ring whole day यानी आपकी दरवाजे की घंटी पूरा दिन बजती रहती है. To whom are you asking, Poonam? Juhi, does your doorbell ring whole day? Poonam, whole the day. Whole the day. No, it does not ring. No, it does not ring whole the day. She Complete the put question. no. Come again. Because she It does not ring whole the day. क्या आपकी दरवाजे पर घंटी सारा दिन बजती रहती है? नहीं, वह सारा दिन नहीं बजती है. But your always rings. Your doorbell always rings. Manya, does milk boil at 50 degree? Yes, sir. It boils at 50 degree. No liquid. Boiling point is 100 degrees Celsius for whole Yes. everything, milk or water. Do you take Amul का milk? अमूल दूध पीता है इंडिया. And Amul milk also boils in 100 degrees Celsius. हम प्रश्न ही ऐसा पूछ रहे हैं कि आप नेगेटिव आंसर दें. No, sir. It does not boil in 50 degree. क्या दूध 50 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? नो सर, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलता है. अब आगे का सेंटेंस भी लगा है तो. Because it boils in 100 degree Celsius. Boils at 100 degree. हमने जानबूझ के पिछला आंसर डबल दिया था, लोकल ट्रेन वाला. Manya, does your aquaguard work properly? मान्य नहीं, जूही जी. Juhi Didi. Yes, it does work properly. ये हम उधार तब लेते हैं जब हमें नेगेटिव बनाना हो या फिर
प्रश्न बनाना हो, अभी हम 2 जगह ले रहे हैं। Does your AquaGuard work properly? अभी नो में ही आंसर Yes. दे। Okay, no, it does not work properly, है ना? क्या आपका एक्वागार्ड अच्छी तरह काम करता है? नहीं, वह अच्छी तरह काम नहीं करता है। जूही जी, आपने कल कुछ सेंटेंस भेजे थे व्हाट्सएप में, नहीं? तो आज करिए आप थोड़ा अभ्यास। पूनम, टाइम मिले तो जरूर 2-4 सेंटेंस जब जब मन में आए तो उठा के, कुछ नहीं तो हरा बटन दबा के बोल दो, छोड़ दो। मान्य, ऐसा ही करना। मुझे भी अगर याद रहा तो मैं भी करूंगा। हमारे किचन से, ड्राइंग रूम से, बेडरूम से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हमारे बन पाएंगे। कोई ना कोई उपकरण ले लीजिए। जैसे एक सेंटेंस जो है जी हम आपसे और पूछते हैं, चलो मान्या से पूछ लेते हैं। मान्या, डज योर मोबाइल चार्ज वेरी फास्ट? No, sir, it does not charge very fast. क्या तुम्हारा मोबाइल बहुत तेजी से चार्ज होता है? नहीं सर, ये बहुत तेजी से नहीं चार्ज होता है। Very normal sentences you can make from your house. So let's conclude the class. Thank you for joining. हम फेस टू फेस दे देंगे आपको, तो प्रैक्टिस करें। और आप खुद भी कर सकते हैं अपने मन से, 10 मिनट, 5 मिनट। Thank you, sir.